Okay guys, let's come to this next example. Illustration number 3.9 from the textbook. That's based on relative motion. Okay, let's start with this first. What is the statement? Two parallel rail tracks run north to south. So you consider one direction. Suppose north and south. Okay, so you consider this one is a north and this one is a south as per our consideration. Okay, right hand side is supposed to be north, left hand side is supposed to be south. We just consider train A moves north with a speed of 54 km/h and train B moves south with a speed of 90 km/h. So this type of situation, consider, suppose it is a track, okay, and here is the train A. That is what actually train A, and here is the train B. ट्रेन A moves towards the north, तो इसकी स्पीड इस तरफ है, मान लो कितनी है, v है. What is this speed? 54 km/h. So it is equal to 54 km/h. And train B moves towards the south, speed 90 km/h. So VB is equal to 90 km/h and the speed is towards the south direction. Okay, this type of situation. So what is we have to find the number of data. First, velocity of B with respect to A. तो first क्या find करना है? Velocity of B with respect to A. First case. Okay, second, velocity of ground with respect to B. So second find करना है velocity of ground. तो यहाँ पे आप ग्राउंड मान लो, ठीक है, ये ग्राउंड ही है, लेकिन यहाँ पे रेस पे ग्राउंड, ये ग्राउंड ही है, ठीक है, तो इसको ही मान लो. चलो यहाँ पे क्या है? ग्राउंड. सो वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विथ रिस्पेक्ट टू बी. सो विथ रिस्पेक्ट टू बी, ये भी फाइंड करना है. और सी फाइंड करना है. थर्ड डेटा, velocity of monkey running on the roof of a train A against its motion with a velocity 18 km/h with respect to train A. मतलब कि यहाँ पे कोई मंकी है, ऐसा दिया हुआ है, ठीक है. ट्रेन A की स्पीड कितनी दी है? 54. लेट्स से राइट हियर VA is equal to 54 km/h and velocity of monkey running on the roof of a train against its motion with 18 km/h. मतलब यहाँ पे कोई मंकी है, मान लो कि ये मंकी है, ठीक है. सो इट्स अ मंकी. इसकी स्पीड कितनी है? वेलोसिटी ऑफ मंकी विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन ए, विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन है, अगेंस्ट इट्स मोशन, है ना. अगेंस्ट है तो डायरेक्शन इस तरफ ले ली. अगेंस्ट इट्स मोशन विथ 18 km/h. तो कितनी है? 18 km/h. सो वी हैव टू फाइंडिंग आउट velocity of monkey running on the roof of train as observed by the man standing on the ground. मतलब यहाँ पे ही आप ग्राउंड ले लो, तो इस मेन मतलब कि इस ग्राउंड की वजह से इसकी वेलोसिटी कितनी. तो थर्ड फाइंड करना है वेलोसिटी ऑफ मंकी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज इक्वल टू. 3 क्वेश्चंस है. ओके, लेट वी जस्ट सॉल्व वन बाय वन. ओके, so let's start with the first one. This is the given situation. Okay, but when you just using this you just finding out the different solution for this example, you must be consider some direction. So right hand side consider supposed to be x. इस direction को आप क्या मान लो? Plus x. So we just write some velocity in a vector form. Okay, so write down all this velocity in a vector form. So velocity of A is given with respect to ground, velocity of B is given with respect to ground, and right hand side is plus x, left hand side is minus x. Okay, so velocity, given data first, given data. So velocity of A with respect to ground, velocity of A with respect to ground 54 km/h. 54, but direction is right hand side. Right hand side is plus x. So plus x means what? I km/h. Second one, velocity of B with respect to ground. इसकी लेफ्ट हैंड साइड है, देखो
लेफ्ट हैंड साइड मीन्स व्हाट, -90i किलोमीटर पर आवर, क्योंकि राइट हैंड साइड को पॉजिटिव लिया है तो लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगी, नेगेटिव। ठीक है, ओके। नेक्स्ट वन, वेलोसिटी ऑफ मंकी विथ रिस्पेक्ट टू ए, कौन सी डायरेक्शन में है, लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड मीन्स व्हाट, माइनस कितनी है, 18 किलोमीटर पर आवर। अब इसका जो भी आंसर है मीटर पर सेकेंड में भी फाइंड कर सकते हो, जो भी आंसर किलोमीटर पर आवर में भी फाइंड कर सकते हो। ठीक है, तो आप कोई भी डायरेक्शन, मतलब कोई भी यूनिट्स में आंसर फाइंड कर सकते हो। इसको आप मीटर पर सेकेंड में लिखते हो तो क्या होगा, 54 किलोमीटर पर आवर। ओके, यू जस्ट अंडरस्टैंड दिस वन, 1 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 1 इंटू 1000 मीटर अपॉन 3600, सो मीटर पर सेकेंड। ओके, कैंसल आउट दिस टू, सो आंसर हो गया इसका 5/18 मीटर पर सेकेंड। आप इस रिलेशन का यूज करके मीटर पर सेकेंड में भी फाइंड कर सकते हो। ठीक है, सो इसको मीटर पर सेकेंड में लिखो if you want the answer in meter per second, otherwise not. Okay, so 54 multiplied by 5 by 18, 54 multiplied by 5 by 18, so 18 3s are 54, so 3 into 5, so 15 मीटर पर सेकेंड। अगर लिखना है तो आई में, ठीक है, इसको लिखना है तो 90, so 18 5s are 90, so cancel out, 5 into 5 25, so -25i मीटर पर सेकेंड। 18 कैंसल, तो इसको बोलते हैं -5i मीटर पर सेकेंड। अगर आपको मीटर पर सेकेंड में आंसर चाहिए ए डाटा यूज करना, किलोमीटर पर सेकेंड आवर में आंसर चाहिए ए डाटा यूज करना। ठीक है, चलो 1 by 1 फाइंड करते हैं। ओके, फर्स्ट वन, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। सो फर्स्ट डेटा ए, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, डायरेक्टली आप फाइंड कर सकते हो वी बी माइनस वी ए। वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, वी बी माइनस वी ए, जनरल इक्वेशन। व्हाट इज वी बी, एक्चुअली ये वी बी है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वी बी बोलते हैं, तो कितना है -90, सो -90 आई, और ये 54, यहाँ का ये माइनस, सो -54 आई। टोटल फाइंड करो, सो 90 + 50 140 एंड 144, सो आंसर इज -144 आई किलोमीटर पर आवर। ठीक है, मीटर पर सेकेंड में करना है तो ये करना है, अगर आप फाइंड कर सकते हो तो ये भी आंसर करेक्ट है। और मीटर पर सेकेंड में आप इसको क्या लिख सकते हो, तो मीटर पर सेकेंड -25i -15i, कितना हो गया, -25 -15 40 है, सो -40i मीटर पर सेकेंड। बट इट्स नॉट करेक्ट आंसर, दिस माइनस एंड प्लस वी आर एक्चुअली एज्यूमिंग, है ना, हमने लिया है। तो करेक्ट आंसर क्या है, माइनस मतलब कौन सी डायरेक्शन, देखो साउथ, प्लस मीन्स व्हाट, नॉर्थ। सो और फर्स्ट आंसर इज व्हाट, ए, फर्स्ट आंसर वेलोसिटी ऑफ बी with respect to A is given as a VBA is equal to what, 144 किलोमीटर पर आवर और 40 मीटर पर सेकेंड। माइनस मीन्स along the south, so along south, this one is a correct answer. Minus plus is not correct answer. Okay, you must be understand. Second one is what, velocity of ground with respect to B. So B, velocity of ground with respect to B, आप इसको अपोजिट लिख दो, सो माइनस वेलोसिटी ऑफ B with respect to ground इन अ वेक्टर फॉर्म। ओके, सो ये तो पता ही है कितना है, -90, तो -90 तो I है ना, सो माइनस माइनस प्लस, सो इट्स बिकम्स +90 आई किलोमीटर पर आवर। मीटर पर सेकेंड में लिखना है तो 90 को कितना लिखना है, 25, तो इसका आंसर हो सकता है 25 आई मीटर पर सेकेंड। बट अगेन इट्स अ रॉन्ग आंसर बिकॉज आई इज वी assume the side, plus I means what, towards north, plus I means what, towards north, because plus I means north direction. So here we write the answer, velocity of ground with respect to B is equal to 90 किलोमीटर पर आवर और 25 मीटर पर सेकेंड along
north. This one is our answer. Okay, actually we must be write the answer in this format. And the last one is what? Find the velocity of monkey with respect to ground. So see, velocity of monkey with respect to ground. सो यूज दिस मेथड. यहाँ पे कौन सा केस है? देखो, मंकी है, ट्रेन ए है एंड ग्राउंड है. थ्री, मतलब यहाँ पे आपके पास थ्री ऑब्जेक्ट्स हुए, तो फिर रिलेटिव मोशन का यूज करो. फर्स्ट लेटर फर्स्ट, लास्ट लेटर लास्ट. सो वेलोसिटी ऑफ मंकी प्लस वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड. तो बाकी कौन रहा थ्री में से? मंकी हुआ, ग्राउंड हुआ, कौन बाकी रहा? ए. तो यहाँ पे लिख दो ए. सो दिस वन. डू यू अंडरस्टैंड? वेलोसिटी ऑफ मंकी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फाइंड करना है. तो आपके पास कितने ऑब्जेक्ट्स हुए? थ्री. यहाँ पे रिलेटिव मूविंग मीडियम हुआ, ठीक है ना. तो ए भी मूव कर रहा है, मंकी भी मूव कर रहा है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में चाहिए, तो आप वेक्टर फॉर्म का यूज करो. सो वेलोसिटी ऑफ मंकी विथ रिस्पेक्ट टू ए प्लस वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ मंकी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड. सो सभी वैल्यू रख दो. वेलोसिटी ऑफ मंकी विथ रिस्पेक्ट टू ए -18. सो -18i. Velocity of A with respect to ground plus 54. So plus 54i. Subtraction करो. 54 minus 18. So हुआ 36. 36i किलोमीटर पर आर. आप मीटर पर सेकेंड में भी फाइंड कर सकते हो. तो -5 प्लस 15. -5 प्लस 15 10. सो इसका आंसर आप लिख सकते हो 10i मीटर पर सेकेंड. ठीक है, बट ये करेक्ट आंसर है. सो प्लस आई मीन्स व्हाट? एक्चुअली नॉर्थ. तो आपको आंसर इस फॉर्म में लिखना चाहिए. वेलोसिटी ऑफ मंकी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज इक्वल टू 36 किलोमीटर पर आर और 10 मीटर पर सेकेंड along north. This one is our answer. Okay, so this is our three cases and three answer. Now you just write down some of this. First you just note this example. Okay, then after I am just giving some example in homework. First you note this. Okay, write down some of this examples are in homework. Some of this example. Find velocity of monkey with respect to B. First example in homework. Second example in homework. Velocity of A with respect to monkey. ये भी फाइंड कर लो. ठीक है, ट्राई करना है. ओके, दो एग्जाम्पल लिख लो. चलो, ये दो एग्जाम्पल होमवर्क में ट्राई करना. ठीक है, नोट दिस. Okay guys, let's come to this next example from the exercise. Example number 3.5. What is the problem statement? A jet airplane traveling with a speed of 500 km per hour. मतलब आपको ये प्लेन मान लो ठीक है. So suppose it is a plane traveling into the air with a 500 km per hour. So this velocity of plane with respect to ground is equal to 500 km per hour. This type of situation. Okay, now ejects a product of combustion at a speed of 15 km per hour relative to the jet plane. Underline relative to the jet plane. मतलब यहाँ से ऐसे गैस बाहर निकल रही है, तो गैस किस तरफ बाहर निकलेगी? अपोजिट डायरेक्शन में. अगर जेट प्लेन इस डायरेक्शन में जा रहा है तो अपोजिट डायरेक्शन में होगी. सो दिस वन इज अ गैसेस, combustion gases. Its speed is what? 15 km per hour. So velocity of gas, गैस को स्मॉल जी लिया. ठीक है. सो वेलोसिटी ऑफ कंबशन गैसेस विथ रिस्पेक्ट टू जेट प्लेन. सो विथ रिस्पेक्ट टू जेट प्लेन. प्लेन को आप पी बोलते हो और गैसेस को आप स्मॉल जी बोलते हो. कितना है ये? 1500 km per hour. दिस टाइप ऑफ सिचुएशन.
now what you have to find, what is the speed of the later मतलब यहाँ पे पहले प्लेन डिफाइन किया हुआ है कि पहले गैसेस डिफाइन किया है, पहले प्लेन डिफाइन किया उसके बाद कंबशन गैसेस डिफाइन किया। सो हमें फाइंड क्या करना है, वेलोसिटी ऑफ लेटर मतलब गैसेस, सो वेलोसिटी ऑफ गैसेस विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर ऑन द ग्राउंड। आप यहाँ पे कोई ऑब्जर्वर मान लो, है ना, तो ग्राउंड है ये क्या है, कैपिटल जी ले लो। सो वेलोसिटी ऑफ कंबशन गैसेस विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज इक्वल टू व्हाट, आपको ये फाइंड करना है, you must be find this, okay? So you just consider any one of the direction is positive, any one of the direction is negative, आप ऐसा मान के चलो। So this direction is supposed to be positive, okay? Positive x ले लो, इस डायरेक्शन आप क्या ले लो, positive x। So you just write down all this data in a vector form to getting this answer। So velocity of plane with respect to ground is equal to plus x, thus both are same, so 500 I kilometer per hour, okay? Now if I write down this second one, velocity of gases with respect to plane is equal to opposite, see, opposite, so minus 1500 I kilometer per hour। और आपको ये फाइंड करना है velocity of gases with respect to ground, so use the vector rule। Use the vector rule। what is the vector rule? Velocity of gas with respect to ground, फर्स्ट है वो फर्स्ट आएगा, लास्ट है वो लास्ट आएगा, वेलोसिटी ऑफ गैस प्लस वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड। बाकी कौन रहा, प्लेन, सो विथ रिस्पेक्ट टू प्लेन हियर बी प्लेन, दिस इज आवर आंसर, ओके? वेलोसिटी ऑफ गैसेस विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, यहाँ पे फर्स्ट जी है तो फर्स्ट आया, लास्ट कैपिटल जी है तो लास्ट कैपिटल है, बाकी कौन रहा, पी, प्लेन, तो इसमें, okay? Now you just find this one, velocity of gas with respect to plane 500 I, sorry, minus 1500 I, velocity of plane with respect to ground, so that's the 500, put the both value, so velocity of gases with respect to ground is equal to first one, so first one कितना हुआ, minus 500 I, minus 500 I, and second one कितना हुआ, गैसेस, सॉरी 1500, सो माइनस 1500 I प्लस सेकेंड वन कितना है, प्लस 500 I, सो प्लस 500 I, जस्ट काउंट द टोटल वन, माइनस 1500 प्लस 500, सो माइनस 1000 I kilometer per hour। but tell me this is correct answer, then it is not correct answer। why? actually I and everything we just assumed it, okay? so you just write the answer in a proper way। so value is 1000 kilometer per hour and its direction is minus, means in this way, so opposite to the plane, opposite to the plane। तो आपका आंसर ऐसे लिखना चाहिए कि velocity of gas is with respect to ground is equal to 1000 kilometer per hour, okay? and minus I means what direction, opposite to the plane, okay? plane की plus x ली है तो opposite आया, तो opposite to the velocity of plane। आपको आंसर ऐसे लिखना है, ये तो हमने एजम किया था I and everything, okay? तो your answer is this one। you just write the answer in this format whenever the relative motion example asking to you in examination, you just write the answer in this form, okay? all of you just note this example